Now the beginning of menstruation at puberty is called the menarche. जब फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब फर्स्ट टाइम menstruation होता है at the time of puberty, that's it is called the menarche. It means जब 14 to 15 13 to 14 के एज at the puberty time female first menses are passes, so this condition is called the menarche. The menstruation cycle consists of 4 phases. First is there the menstrual phases. Now in menstrual phase, this one is the menstrual phase. So what changes in their menstrual phases? See first point. The cycle starts with this phase when menstruation flow occurs and it is lasts for 3 to 5 days. इन मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि साइकिल स्टार्ट विद दिस फेज. इट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है इन दिस फेज. इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है. मेंस्ट्रुएशन फ्लो इट मीन्स ब्लड फ्लो होता है, दैट्स कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन फ्लो. तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो इट मीन्स ब्लड कैन फ्लो बाय द वेजाइना एंड इट ऑकर्स, इट लास्ट 3 to 5 days. ये जो टाइम पीरियड होता है वो 3 to 5 days का होता है, जिसे हम ब्लीडिंग टाइम भी कहते हैं. द मेंस्ट्रुएशन फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग. मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता क्यों है? बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग. एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो टूट जाती है. सो इट्स ब्लड वेसल्स इज ऑल्सो रप्चर्ड अलॉन्ग विद देयर एंडोमेट्रियल. सो अलॉन्ग विथ अनफर्टिलाइज ओवम, ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है. एंडोमेट्रियल लाइनिंग आर ब्रेक डाउन इन द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स ऑल्सो दे कैन बी ब्लीड. नाउ नेक्स्ट फेज इज देयर द follicular phase. Follicular phase it means inside the ovary, primary follicle, secondary, tertiary, and this one is the Graafian follicle. So what changes in the follicle inside the ovary? So this phase is there, the follicular phase. So this one is there, primary follicle. Now in this phase the primary follicle in the ovary grow, becomes fully mature into the Graafian follicles. It means ovary के अंदर primary follicle, secondary, tertiary, and they can be, this one is there, the Graafian follicle. तो प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्जन सेकेंडरी टर्शरी करते हुए ग्राफिन फॉलिकल्स में जो होता है, दे कैन बी मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल. द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज रीजनरेटेड बाय proliferation and its cells. So these changes are due to secretion of LH or FSH. ये चेंजेस किसकी वजह से होता है? LH and FSH from the anterior pituitary and the ovarian hormones estrogen and progesterone. So it lasts for about 14 days. ये इनका जो इवेंट्स होता है फॉलिकुलर फेजेस का, दिस वन इज़ देयर द 14 days. इट मीन्स आपका जो मेंस्ट्रुएशन फेज होगा वो 3 to 5 days होता है, एंड 5 के बाद जो 6 day आएगा, 6 से 14 days का जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज. फॉलिकल्स दे कैन बी डेवलप इन दिस टाइम. नाउ इन दिस फेज में क्या होता है कि LH और FSH, LH is there the luteinizing hormones. Now FSH is there follicular stimulating hormones from the anterior pituitary. follicles के development के लिए LH और FSH are secreting from the anterior pituitary, and ovarian hormone is also there, estrogen and progesterone. Now it lasts about the 14 days. Now next phase is there ovulatory phase. In ovulatory phase, both LH and FSH attain peak level in the middle of the cycle. जैसे ही 15 डे आता है, इट मीन्स जब मिडिल डे ऑफ द साइकिल, क्योंकि 1 to 30
डेज का हम टाइम पीरियड है, तो 1 to 30 डेज में हम फिफ्थ मिडिल डे आएगा आपका 15. सो इन दिस टाइम LH and FSS both level are the peak. So this condition is called the LH surge. Now in this phase what going on there? It induce rupture of Graafian follicles and thereby release the ovum. तो इस समय क्या होता है कि Graafian follicles जो होती है वो मैच्योर होती हैं, they can be ruptured and releasing the ovum. This process is called the ovulation. इस process को हम क्या कहेंगे? Ovulation कहेंगे. So next point is there. Now next phase is there, the luteal phase. In luteal phase, in this phase, the ruptured Graafian follicles is transferred into the corpus luteum. It means जो Graafian follicles थी, जैसे ये ruptured हो गई और ओवम को इसने रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ करने के बाद जितना रिटेन मटेरियल है, दिस वन इज़ कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम. सो रप्चर्ड फॉलिकल्स जो होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज देयर द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. सो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन करता है. तो ड्यूरिंग दिस टाइम दे आर सीक्रेट द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो बहुत ही नेसेसरी होता है मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम के लिए. सो अब ओवम तो रिलीज़ हो गया. ओवम रिलीज़ होने के बाद दिस वन इज़ ओवम. ओवम अगर फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, so ovum they can be fertilized by the sperm, they form the zygote and pregnancy क्या हो जाएगी? occurs हो जाएगी. so pregnancy that occurs, तो during this time menstruation cycle stop. अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ स्पर्म से और प्रेगनेंसी हो गई तो उस समय साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी एंड कोई भी नो मेंस्ट्रुएशन, मतलब नेक्स्ट मंथ कोई भी पीरियड्स हमको नहीं आएंगे. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इट मीन्स ओवम हमारा फर्टिलाइज नहीं होता है स्पर्म से, सो कॉर्पियस ल्यूटियम क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट एंड दिस कॉजेज disintegration of the endometrium leading off to menstruation. तो वो नेक्स्ट menstruation के लिए, नेक्स्ट पीरियड्स के लिए आ जाएगा. ना द menstruation cycle की चीज़ at the age of 45 to 50 years, it is called the menopause. In this time the menstruation cycle जो होती है वो 45 to 50 years तक होती है. उस कंडीशन देन 50 ईयर्स के बाद क्या 45 to 50 ईयर्स में किसी का 45 पे स्टॉप हो जाता है, किसी का 50 ईयर्स में स्टॉप होता है. तो ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, दिस कंडीशन इज़ नोन एज द मेनोपॉज. इट मीन्स पीरियड्स कैन बी स्टॉप ड्यूरिंग द एज ऑफ 45 to 50 एज. तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज द मेनोपॉज. नाउ यू सी द डायग्राम व्यू. This one is the diagram of menstruation, follicular and luteal next cycle. All these phases are shown in this diagram. Now you see first is there, this one is there, menstruation. This phase are there, the menstrual phase. तो what changes in the uterine events? It means uterus में क्या changes होते हैं? Look at there, this one is the bleeding, blood endometrial breakdown and start the bleeding. So this one is the menses. In this phase, what changes in the uterine events? What changes in the ovarian hormones level, ovarian events and pituitary hormone. Now FS and LHS are there. This one is the follicles. Now in here start the bleeding on this time. So menstruation phase, what is the time? 1 to 5 days are there for menstruation time. Now next phase is there,
it means 5 to 13 days, 14 days. Now 6 to 14 days. This time is there the follicular phase. In follicular phase, they are developing the follicles, converting into primary to the mature graphene follicles. So this one primary, secondary, tertiary, then this one is the mature graphene follicles. So mature graphene follicles in here. So in this time LH or FHS, what is the condition of LH and FSS? You see in here, in estrogen and progesterone are increasing in here for developing the follicles. Now this phase is called the follicular phase. Now after that 15 day are there. In 15 day, this one is there, ovulatory phase. In ovulatory phase, ovum are released from the graphene follicles. So in this phase, LH and FS both are the peak level. Estrogen and progesterone level is also high in this time. So this time period is called the ovulatory phase. Now after ovulatory phase, this one, it means time period of the 16 to 29. So this time is there is luteal phase. Now in luteal phase, in this time, ovum are released from the graphene follicles. Ovum are released from the graphene follicles. So ovum अगर release हो गया तो ovum they can be fertilized by sperm. Ovum अगर fertilize हो जाता है sperm से तो what occurs in there? This one is the pregnancy occurs. Ovum can fertilize by sperm, so they form the zygote. और जाइगोट बनने के बाद प्रेगनेंसी occurs हो जाएगी. अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो this material, it means in this time progesterone level is high. प्रोजेस्टेरोन लेवल इस टाइम हाई हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन जो हो जाएगी वो स्टॉप हो जाएगी, पीरियड्स नहीं आएंगे. तो मेंस्ट्रुएशन कैन स्टॉप ऑन दैट टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. सो इन नेक्स्ट मंथ नो मेंसेस आर अकर्स. सो अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, ओवम कैन नॉट फर्टिलाइज, सो इन दिस टाइम corpus luteum are regressive and they are disintegrated. So in this time they are prepared for the next menses. So next cycle then can start and beginning. Now come in the summary points of their menstruation cycle. In this summary points you see the events during the menstruation cycle. It's a 28-day cycle. Now in here written the phase, in here written the days, and here written the events. So we discussed with you. First is there the menstruation cycle. In menstruation cycle, what going on there? Its time period is 1 to 5 days. 1 to 5 days time period is there, the menstruation cycle. What events are there? What changes in there? Endometrium breakdown होती है. menstruation begins मतलब स्टार्ट हो जाता है. द सेल ऑफ ब्रोकन एंडोमेट्रियम ब्रोकन हो जाती है उनकी सेल्स. सिक्रीशंस एंड ब्लड अनफर्टिलाइज ओवम कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुएशन फ्लो. इन मेंस्ट्रुएशन फ्लो में जो होता है वो सिक्रीशंस हैं, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज ओवम जो होते हैं एंडोमेट्रियल, ये जो होते हैं इंक्लूडेड होते हैं. इन दिस प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस. उस समय प्रोजेस्टेरोन का जो प्रोजेस्टेरोन का जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है. नाउ नेक्स्ट फेज इज देयर द फॉलिकुलर एंड प्रोलिफरेटिव फेज. सो डेज आर देयर 6 to 13 days. इन दिस टाइम एंडोमेट्रियम रीबिल्ड, FSH secretion एंड एस्ट्रोजन secretion इंक्रीज. इस टाइम क्या होगा, एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, FSH का भी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम के रीबिल्ड के लिए भी हमें ये दोनों हार्मोन्स चाहिए. और इनसाइड द ओवरी दे आर फॉलिकल चेंजेस ऑल्सो आर देयर. दे आर कन्वर्टिंग द प्राइमरी टू द ग्राफिन फॉलिकल्स. सो फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए भी बोथ हार्मोन्स आर देयर नेसेसरी.
Now next phase is there the ovulatory phase. Ovulatory phase is there 14. In this time, LH and FSH in peak level, concentration of estrogen in the blood is also high and reach its peak. Graph and follicle ruptured and releasing the ovum. This process is called ovulation. In this phase is called the ovulatory phase. Now next phase is there the luteal and secondary phase. Now luteal and secondary phase, you see this time period is 15 to 28 days. In this phase what events are? Corpus luteum is formed and secrete progesterone.